A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last three videos, we discussed the very important chapter of part B of class 11th accountancy, that is a financial statement of sole proprietorship with adjustment. In the last chapter, we discussed how sole proprietors prepare its trading account, profit and loss account, and balance sheet without any kind of the adjustment. But some of the important questions have a given information related to the sole proprietorship with the trial balance, as well as the some of the additional information which are given outside the trial balance. And any information, you know very well, any information which are given outside the trial balance will be known as an adjustment. So it is the responsibility of every accountant to include such adjustment into the financial statement of sole proprietorship. Because if we prepare the financial statement of sole proprietorship without include any kind of the adjustment in it, so the trading account does not disclose the correct gross profit and gross loss. Similarly, profit and loss account cannot disclose the true net profit and net loss of the business, as well as when we prepare the balance sheet, so it does not provide the accurate information about of the business regarding the liabilities, capital and assets at the end of the year. That's why adjustment को हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. That's why in the last three videos we discussed a lots of adjustment like a closing stock, outstanding expense, prepaid expense, accrued income, advance income, depreciation, interest on capital, interest on drawing, interest on loan, as well as we already discussed the few of the important adjustment like a bad debts, provision for doubtful debts, provision for bad debts, and provision for discount on debtor. So in this video, first of all, we revise the very important adjustment, that is a bad debts. Number second, provision for bad debts. Number third, provision for discount on debtor. Okay. And number four, provision for, sorry for that. Number one, in this video, first of all, we revise the bad debts, provision for bad debts, and provision for discount on debtor. And thereafter, we will take the one numerical problem by which we prepared the financial statement of sole proprietorship with the few adjustment. And after that, we will introduce a new adjustment which are also required to adjust in the when we prepare the financial statement of sole proprietorship. So let us start the today's video. Okay, all the best. Next adjustment is adjustment number 11, and it is a very important adjustment, that is a provision for bad debts or doubtful debts. So this is adjustment number 11. That is a you can see that what is the bad debts. Bad debts means amount unrecovered from the debtor. जो पैसा डेटर से रिकवर होने के चांसेस नहीं होते हैं, इट विल बी नोन एज अ bad debts. And what is the meaning of the doubtful debts? The amount which are in doubt, मतलब कोई ऐसे डेटर्स की अमाउंट जो अभी भी डाउट में है कि which can be realized or cannot be realized. So उसको हम लोग बोलते हैं doubtful debts. And you know very well, according to the conservatism concept, we will create the reserve for the anticipated losses and expenses. यानी कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई लॉस है, कोई भी हमें फ्यूचर में ऐसा फील हो रहा है कि हमें फ्यूचर में कोई हैवी एक्सपेंसेस है, तो उसके लिए अभी से हमें प्रोविजन बनाते रहना चाहिए. एज लाइक इट इज अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज अ टोटली बेस्ड ऑन द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट. क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन क्रिएट करना फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द बैड डेब्ट्स, यानी वो पैसा जो डूब सकता है, जो डूब गया है, उसके लिए प्रोविजन बनाना, और जो डूबने वाला है उसके लिए भी प्रोविजन बनाना. बेसिकली यहां पर मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा कि दे आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ द डेटर्स: गुड डेटर्स,
डाउटफुल डेटर्स एंड बैड डेटर्स। बेसिकली गुड डेटर्स वो डेटर्स होते हैं जो पूरा अपना ड्यूज टाइमली पे कर देते हैं। डाउटफुल डेटर्स वो होते हैं जो पूरा नहीं, लगभग 50%, 80%, 90%, यानी 1% से लेके 99% तक अपना ड्यूज क्लियर करते हैं, उन्हें हम लोग डाउटफुल बोलते हैं। और बैड डेट्स उन्हें बोलते हैं जिनका पूरा कोई चांस ही नहीं होता है कि वो पैसा रियलाइज्ड होगा। बेसिकली अगर मैंने किसी को 10,000 रुपीज उधार दिया फॉर शॉर्ट टर्म पर्पज, तो ही बिकम्स अ डेटर फॉर द फर्म। गुड डेटर वो होगा जो टाइमली 10,000 हमें रिटर्न कर देगा। डाउटफुल वो होगा जो 10,000 में 8,000, 9,000, 7,000, 5,000 हमें पे करेगा, और जितना पे नहीं होगा इट विल बी नोन एज द बैड डेब्ट्स। इज दैट क्लियर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटर? डेटर्स को हम लोग बुक डेब्ट्स भी बोलते हैं। डेटर विल आल्सो नोन एज द बुक डेब्ट, सो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, डेटर को हम लोग बुक डेब्ट्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो जो डाउटफुल डेटर्स होते हैं, बैड डेटर्स होते हैं, यानी जो डेब्ट्स अभी भी डाउटफुल इन नेचर है एंड बैड इन नेचर है, उनके लिए हम क्या बनाते हैं? प्रोविजन बनाते हैं। ओके, सो इस प्रोविजन का क्या इफेक्ट पड़ता है बैलेंस शीट में, क्या इफेक्ट पड़ता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, सोल प्रोप्राइटरशिप के? लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट। सो फर्स्टली, व्हाट इज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स? प्रोविजन created for bad and doubtful debtors are known as provision for bad debts और doubtful debts. So जो भी हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं किस लिए? फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्टर्स के, are known as the provision for bad debts and doubtful debts. What are the effect of such adjustment on the financial statement of sole proprietorship? So the first effect of provision for bad debts and doubtful debts are to show the debit side of profit and loss account. उसे हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इज दैट क्लियर? एंड सेकेंडरी, it will be deducted from debtor, इसे हम डेटर से माइनस करते हैं, डिडक्टेड फ्रॉम डेटर इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। Okay, so please note down in your copy properly the adjustment number 11, provision for bad and doubtful debts. What is a provision for doubtful debts? Provision created for bad and doubtful debts are known as a provision for bad debts or doubtful debts. And effect of provision for bad and doubtful debts on the financial statement are as follows. Okay, the first one is it will be shown in the debit side of the PL account, and number second, it will be deducted from debtor in asset side of the balance sheet. Okay, so what is the adjustment entry of provision for bad and doubtful debt? The adjustment entries of provision for doubtful debts are, the entry will be profit and loss account debit to provision for bad debts. Okay, this is a journal entry, adjustment journal entries. The adjustment number 12, which are also related to the debtor, that is provision for discount on debtor. Basically, you know very well, some of the important situation, a businessman allowed a discount to the debtor to increase the prompt payment in cash. Basically, you know very well who's a debtor, the person to whom goods sold on credit, जिसे हम उधार में goods बेचते हैं. And you know very well, when we sold the goods to the third party, so हम उसको उनकी पेमेंट को इंक्रीज करने के लिए कि वो जल्द से जल्द हमें पेमेंट करें, टाइमली पेमेंट करें, we give the discount to him. So you know very well, discount is also the future expenses, which is also the expenses for the business. So according to the conservatism concept, हम डिस्काउंट के लिए भी क्या बनाते हैं? प्रोविजन बनाते हैं. So basically, what is a provision for discount on debtor? The provision for discount on debtor is a provision
created for provision created for provision created for allowing discount provision created for allowing discount to debtor, and the effect of provision for discount on debtor are as follows. The effect number one is it will be shown in the debit side of profit and loss account, and the second effect of provision for discount on debtor is it will also deduct it from debtor in asset side of balance sheet. Okay, so please note down, it is a very important, that is a provision for discount on debtor. So what is provision for discount on debtor? Provision created for the allowing discount to debtor, यानी डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ करने के लिए, डिस्काउंट प्रोवाइड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन क्रिएट करते हैं, दैट विल बी नोन एज अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. एंड द इफेक्ट यू नो वेरी वेल, द इफेक्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज totally same as the provision for bad debts or the doubtful debts. Okay, इसकी क्या जनरेटिव होगी, सेम. जब एडजस्टमेंट सेम है तो जनरेटिव विल आल्सो सेम, दैट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा क्लियर होना जरूरी है. कॉन्सेप्ट मींस यू नो वेरी वेल, बैड डेब्ट्स हो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स हो, एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हो, इन तीनों का कॉन्सेप्ट सेम है, तीनों का अकाउंटिंग एडजस्टमेंट सेम है. यू कैन सी दैट in this video. Adjustment number 10, bad debts. Adjustment number 11, that is provision for bad and doubtful debts. And adjustment number 12, that is a provision for discount on debtor. All the effect, all the effects, all the types of the effect of are same in the financial statement of sole proprietorship. तीनों का effect same है. You can see that. तो ये तो सामने ही दिख रहा है आपको. प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का इफेक्ट देख लो और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का इफेक्ट देख लो, दोनों का इफेक्ट सेम है. एज लाइक इट इज अ बैड डेब्ट्स का भी जो इफेक्ट होता है वो भी क्या है, सेम है. सो एडजस्टमेंट नंबर 10 हो या एडजस्टमेंट नंबर 11 हो और एडजस्टमेंट नंबर 12 हो, तीनों का इफेक्ट सेम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट थोड़ा सा उसमें लिटिल बिट चेंजेस है. वो क्या चेंजेस है, लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट. Let's we take the one numerical problem for creating a better understanding for the adjustment number 10, 11 and 12. Okay, so the question is, the trial balance is given, that is a, in which you can see that is a debtor of rupees 1 lakh. Okay, and according to the adjustment is given, adjustment number 1, bad debts rupees 1000. Okay, number second, create provision for doubtful debts at the rate of 5%, and number third, create provision for discount on debtor at the rate of 2%. ये तीनों ही एक दूसरे के सिमिलर होते हैं बेसिकली, चाहे वो डेटर बैड डेब्ट्स हो, चाहे प्रोविजन हो, चाहे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हो, ये तीनों के एडजस्टमेंट सेम होते हैं, बट इन सबका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंस होता है. सो इनको अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करें, सो यू कैन सी दैट हाउ वी विल शो दिस एडजस्टमेंट इन द फाइनल अकाउंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, एंड दीज आर as follows. First of all, we prepare the profit and loss account. So you know very well, bad debts will be shown in the debit side of the PL account. So bad debts is 1000. When we are talking about the creation of the provision for bad debts, so it will also shown in the debit side of the PL account. So provision for bad debts कितना निकलेगा, that is a 5% of debtor. It is a very important
adjustment for this chapter of this chapter. So 5% हमें प्रोविजन क्रिएट करना है. So 1 लाख का 5% क्रिएट नहीं होगा. 1 लाख में ऑलरेडी 10,000, सपोज बैड डेब्ट्स 10,000 है. सो 10,000 क्या हो चुका है, बैड डेब्ट्स हो चुका है. सो हमारे पास कितना डेटर अवेलेबल है, ओनली 90,000. तो हम सिर्फ 90,000 का ही 5% क्या क्रिएट करेंगे, दैट इज अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, and it will be a 4,500. So bad debts is 10,000, provision for bad debts is 4,500, and now we will prepare the provision for discount on debtor. उसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे that is a provision for discount on debtor. कैसे क्रिएट करेंगे, the debtor is 1 lakh, उसमें से 10,000 first of all we deduct the debtor or bad debts, and thereafter we deduct the provision for doubtful debts. So provision for discount on debtor कैलकुलेट करने के लिए पहले हम 1 लाख रुपए यानी डेटर में से 10,000 एंड 4,500 टोटल माइनस करेंगे. सो 1 लाख माइनस 14,500, वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 85,500. ओके, 85,500 का कितना कैलकुलेट किया जाएगा, दैट इज अ 2%. So the value is 5 2s are 10, 1, 17, 10. So this is a profit and loss account which will be prepared with the available adjustment. जैसे you can see that bad debts क्या हुआ, राइट डाउन हो गया 10,000. प्रोविजन कैसे कैलकुलेट हुआ, 1 लाख डेटर था, उसमें से डेटर कितना माइनस हो गया 10,000. अवेलेबल डेटर इज 90,000, 90,000 का 5%. Okay, and thereafter when we are talking about the provision for discount on debtor, so debtor कितने थे हमारे पास, डेटर कितने थे 1 लाख, उसमें से बैड डेब्ट्स कितना हो गया 10,000, 4,500 का प्रोविजन क्रिएट हो गया फॉर बैड डेब्ट्स. तो टोटल कितना डिडक्ट होगा 14,500. तो अवेलेबल डेटर इज 85,500, उसका 2% क्रिएट होगा. ओके, सो दिस इज द effect of bad debts, provision for doubtful debts, and provision for discount on debtor on the profit and loss account of sole proprietorship. Let's prepare the balance sheet. अब हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. So when we prepare the balance sheet of sole proprietorship, you know very well debtor will be a 1 lakh, but you know very well उसमें से हमें क्या माइनस करना होगा, बैड डेब्ट्स. कितना बैड डेब्ट्स हो गया 10,000. तो हमारे पास कितने के डेटर हो गए 90,000. सो आप देख लोगे 90,000 पे ही क्या क्रिएट हुआ होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, एंड देयर आफ्टर वी डिडक्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, सॉरी फॉर दैट. सो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज 4,500. तो हमारे पास कितने के अब बचे डेटर 85,500. ओके, सो 85,500 पे अब हमारा क्या क्रिएट हुआ होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. अब ये माइनस होगा प्रोविजन फॉर discount on debtor, that is 1710. So now our closing debtor will be a 9 7, that is a 4 3, 83,790 rupees as a closing balance of the debtor at the end of the year. So I hope it is clear for you how we will show the bad debts, provision for bad debts, and provision for discount on debtor in the balance sheet of the as well as the PL account of the sole proprietorship. Okay, so please note down in your copy. So in this video, first of all, we revised the important adjustment related to the sole proprietorship, financial statement of sole proprietorship, that is the provision for bad debts and provision for discount on debtor, as well as we solve the practical problem related to the provision for bad debts and provision for discount on debtor and the bad debts when they are given as an adjustment, that is outside the trial balance. So after completing the first 12 adjustment, let's we move to the next adjustment, adjustment number 13, that is an abnormal loss. You know very well what is abnormal loss. नाम से ही क्लियर है, ऐसे लॉस जो नॉर्मल सिचुएशन नहीं होते, यानी कोई ऐसे लॉसेस जो हमारे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड होते हैं, यानी जिसको हम नॉर्मल नहीं मान सकते.
बिजनेस में कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जिनको हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये लॉसेस होंगे ही होंगे, चाहे हम कितना भी अच्छा मैनेजमेंट रख लें, कितनी भी अच्छी एफिशिएंसी रख लें. So basically, abnormal loss, all those loss which are beyond the control of the management. Okay, so इन तरह के losses को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो करते हैं? Let's we discuss about it. So what is the definition of the abnormal loss? Let's we discuss about it. Please note down. Losses may be due to X may be incurred due to accident, natural calamities like a flood, you know very well, and and other abnormal circumstances, or situations. यानी कोई भी ऐसे लॉसेस जो कि एक्सीडेंट के थ्रू हो या नेचुरल कैलामिटीज लाइक अ फ्लड, लाइक अ ड्रॉट, लाइक अ अर्थक्वेक. तो सिचुएशन से जो भी लॉस होते हैं, इट विल बी ट्रीटेड एज अ abnormal loss. So the first type of the abnormal loss is loss of goods. Suppose ड्यू टू द एबनॉर्मल सिचुएशन आपके जो बिजनेस का जो गुड्स है वो लॉस हो गया, खराब हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया. सो सच काइंड ऑफ द नोन एज द एबनॉर्मल लॉस. सो लॉस ऑफ गुड्स के केस में हम कैसे इसको शो करते हैं? सो द एडजस्टमेंट एंट्री रिलेटेड टू द लॉस ऑफ गुड्स आर एज फॉलोज. द the first entry which are related to the loss of goods is loss by फायर. यू नो वेरी वेल, जनरली जो गुड्स होते हैं हमारे वो फायर के थ्रू अगर खराब हो जाएं, फायर के कारण. सो द फर्स्ट एंट्री विच आर रिलेटेड टू लॉस ऑफ गुड्स, दैट इज अ लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस. द सेकंड एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर. बट यू नो वेरी वेल, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिचुएशन हम अपने एबनॉर्मल लॉसेस को इंश्योरेंस कंपनी से क्या करा लेते हैं? सिक्योर करा लेते हैं. सो इफ loss of goods compensated by insurance company. Which kind of company? इंश्योरेंस कंपनी. जैसे अगर आपका गुड्स लॉस्ट हुआ, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है, तो सीधे सीधे एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज एंड पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर. सिंपल सी एंट्री होगी. ओके, तो इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? लॉस ऑफ गुड्स. अगर आपने इसका इंश्योरेंस नहीं किया है, विदाउट इंश्योरेंस आपने उसका इंश्योरेंस नहीं कराया था, तो उसका इफेक्ट सिंपल सा ये पड़ेगा. फर्स्ट इफेक्ट दैट इज अ परचेज में से उसे माइनस कर देते हैं, एंड सेकंड विल बी अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं, दैट इज लॉस बाय फायर. लेकिन अगर आपने उस गुड्स को इंश्योरेंस कराया हुआ है, उस लॉस को अगर आपने इंश्योरेंस कराया था पहले से ही, कि अगर इन फ्यूचर अगर आपका गुड्स लॉस्ट होता है ड्यू टू द फायर, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी. सो इफ लॉस ऑफ गुड्स कंपनसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, तो सिचुएशन में पहला इफेक्ट तो कंपल्सरी पड़ेगा ही पड़ेगा, दैट इज अ लॉस बाय फायर टू परचेज. उतने का गुड्स तो खराब होगा ही होगा, यानी आप अपने परचेज में से माइनस करेंगे. सेकेंड, यू नो वेरी वेल, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा दिया, सो द जितना पैसा मिलेगा उससे एंट्री पास होगी, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर. और यू नो वेरी वेल, कभी भी इंश्योरेंस कंपनी आपको लॉस का पूरा पैसा नहीं पे करती. जैसे 10,000 का लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 प्रोवाइड किया, तो 6,000 से आपका लॉस राइट ऑफ हो जाएगा, बट जो बाकी 4,000 बचा हुआ है, इट विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर. ओके, सो द इसका हम कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर. ये थोड़ा सा ट्रिकी है. अब इसका इफेक्ट हम आपको बता देते हैं. ठीक है, मान लीजिए इंश्योर्ड है, तो किस सिचुएशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो लॉस बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स
बाय फायर। अगर आपका गुड्स लॉस हो जाता है, खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉयड ऑफ गुड्स बाय फायर, तो अगर आपने इसको इंश्योर्ड कराया हुआ, इंश्योर्ड, और दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि आपने उसको इंश्योर्ड नहीं कराया है। इंश्योर्ड कैसे पता चलेगा इंश्योर्ड कराया है? अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कुछ क्लेम दिया, और नॉट इंश्योर्ड कब आपने वो एज्यूम करेंगे? जब आपके क्वेश्चन में इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो कि इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ पैसा देना है कि नहीं देना है। तो अगर नॉट इंश्योर्ड होगा तो पहला इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेज इन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, सो आप उसको परचेज में से माइनस कर दोगे जितने का आपका लॉस हुआ है। एंड सेकेंड विल बी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा? लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर इफ इट डज नॉट इंश्योर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी, so the effect is deducted from purchase in debit side of the trading account। और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा? दैट इज पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। यू कैन सी दैट परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इस सिचुएशन में, सो परचेज में से माइनस होगा, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे किस नाम से? टू लॉस बाय फायर के नाम से। सपोज अगर आपने उस गुड्स को इंश्योर कराया हुआ था, तो सिचुएशन में द फर्स्ट इफेक्ट वो तो सिंपल पड़ेगा ही पड़ेगा, दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेज इन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। यानी पहला इफेक्ट कंपलसरी है कि आप उसको परचेज में से माइनस करोगे, किस में? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में से माइनस करोगे। ट्रेडिंग के डेबिट साइड में यू नो वेरिएबल परचेज हम लिखते हैं, तो परचेज में से उस वैल्यू को माइनस कर दो। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी जो आपकी डेबिट हुई है, इट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट शोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओके, यानी आप इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट को जितना वो आपको क्लेम दे रहा है, उस वैल्यू से आप क्या करोगे? एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड को इंक्रीज कर दो। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। तो मैं रफ कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो आपने पहला क्या देखा? परचेज में से हमने माइनस किया बिकॉज परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ था। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हुआ था, दैट्स वाई इंश्योरेंस कंपनी को आपने कहां शो करोगे? इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एंड द थर्ड इफेक्ट विल बी अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट भी हुआ है, यानी कि जो रिमेनिंग अनरिकवर्ड अमाउंट है, अनरिकवर्ड लॉस, अनरिकवर्ड लॉस will be shown in debit side of profit and loss account। यानी कि जितना आपको रिकवर्ड हुआ है, जैसे सपोज आपको 10,000 का लॉस हुआ, तो 10,000 रुपीज आप परचेज में से माइनस कर दोगे। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 6,000 दे दिया, तो 6,000 से इंश्योरेंस कंपनी को बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करोगे, और 4,000 आपको रिकवर्ड नहीं हुआ, so it will be shown in the debit side of the PL account, that is loss by fire। ओके, सो इससे हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम कैसे शो करेंगे। सपोज इन द ट्रायल बैलेंस there is a given information about the purchase। ओके, परचेस की वैल्यू दी हुई है, दैट इज ऑफ 1 लाख, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियरली एडिशनल इंफॉर्मेशन एज, या मैं इसको यहां लिख देता हूं ताकि आपके लिए क्लियर रहेगा। सपोज परचेज है 1 लाख, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 इज लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर रुपीज 10,000। इज दैट क्लियर? आउट ऑफ विच, उसमें से आउट ऑफ विच 7,000 rupees received from
इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे ही लिखा होगा कि आपका टोटल लॉस कितना हुआ और उसमें से कितना इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम एक्सेप्ट किया। लिख सकता है आउट ऑफ विच 7,000 विल बी एक्सेप्टेड एज अ क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो सिचुएशन में एक ही एडजस्टमेंट पे यू कैन सी दैट जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, सो यू विल शो द परचेज इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप परचेज शो करोगे दैट इज अ टू परचेज, 1 लाख शो नहीं करोगे, उसमें से माइनस करोगे 10,000, क्योंकि टोटल लॉस आपको कितना हुआ 10,000 का। सो 90,000 आप क्या करोगे ट्रेडिंग अकाउंट में से माइनस कर। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे सो पहले आप देखोगे कि आपको लॉस कितना हुआ। आपको लॉस हुआ था, टोटल लॉस हुआ था 10,000 रुपीज का, बट उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने कितना कंपनसेट कर दिया, दैट इज अ 7,000। सो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 7,000 दे दिया, सो 3,000, या देने वाली है, अभी दिया नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे, व्हेन यू प्रिपेयर दी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर उसने पैसा दे दिया है सो कैश में लिख ऐड कर दोगे, अगर पैसा नहीं दिया है तो आप इंश्योरेंस कंपनी के नाम से 7,000 से अपनी एसेट्स क्रिएट कर लो, यानी इंश्योरेंस कंपनी आपको फ्यूचर में या कुछ समय बाद आपको पैसा पे करेगा। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। ये थोड़ा सा ट्रिकी एडजस्टमेंट था, दैट इज अ लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर एंड इट इज कैटेगराइज्ड अंडर द एडजस्टमेंट नंबर 13, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। ओके, और अगर सिर्फ 1 लाख लॉस बाय फायर हो जाता 10,000 रुपीज का, कोई इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई मतलब ही नहीं होता बैलेंस शीट से। सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 परचेज में से माइनस करो और 10,000 टोटल लॉस बाय फायर शो करो। इट इज वेरी इजी। ओके, so I hope today we cleared all the topics very easily. In the next video we will introduce a new types of the adjustment. आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।